War 2 is the most eagerly awaited film of 2025 as per the reports of bookmyshow.com and that's a wonderful news for the film industry. 14 अगस्त 2025 को फिल्म रिलीज होने वाली है. जूनियर एनटीआर, ऋतिक रोशन एंड कियारा अडवाणी. The expectations have always been very very high. War, the first outing was a huge success and obviously franchisee का expectations बहुत ज़्यादा high थे, लेकिन this is going from one level to almost something else altogether. एक और बड़ी खबर सामने आई है कि तेलुगु rights of War 2 they are expected to go anywhere between 85 crores to 120 crores. Now that is another massive number. We have to understand that Junior NTR is a huge name in South and especially in Telugu industry, or he's a big factor. Obviously ऋतिक रोशन का पैन इंडिया अपील है. So अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर सिर्फ तेलुगु के राइट्स अगर सिर्फ इतने जाने की एक्सपेक्टेशन है, तो फिर बाकी और जो राइट्स हैं हिंदी के, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस, how much it is going to be like, and then the overseas as well. There's a tremendous buzz for the film. There is the buzz has always been there because franchisee बहुत strong रही है. ऋतिक रोशन अभी recently USA का टूर कर रहे थे और वहाँ पर बड़े एक्साइटेड होके उन्होंने वॉर 2 के बारे में उन्होंने बात करी है. ही हैज स्पोकन अबाउट कैसे तारक, जूनियर एनटीआर, ही इज अ वेरी गुड कुक एंड दे शेयर अ वंडरफुल केमिस्ट्री. इट्स वेरी अपरेंट और ये हमेशा एक बहुत अच्छा एक आई थिंक एक अच्छी न्यूज़ होती है. Tarak is Junior NTR is playing the negative lead, which is another going to be unconventional for sure. Ayan Mukherjee director हैं पिक्चर के, अब्बास सारवाला राइटर हैं. That's what the credit says. So he's a very fine writer. So I'm looking forward to the way he has conceptualized and executed the story as well. So yes, there will be fantastic action sequences. The VFX will be next level. Music should be something else. Both Hrithik and Tarak, they're very good dancers. तो किस तरीके का एक उनकी जुगलबंदी होगी, मुझे लगता है कि होना चाहिए. That should be the public demand. How will that be going to pan out? So lots of expectations from the film, and no wonder that it is the most awaited film of 2025. What are your thoughts? Do share your thoughts. This is Faridun Sharia for Connect Cine. Stay connected.